Assalamu alaikum students. Today the topic that we will discuss is introduction of organic compounds and their sources. Basically all the organic compounds are mainly classified into two classes, that is organic and inorganic, on the basis of their source. The sources of organic compounds can be animals and plants, and these animal and plants can be in living form or in the dead form. For example, living animal and plants give us proteins, fats and oils, carbohydrates, proteins, vitamins and oils. And the dead plants and animals, when buried under high temperature and pressure under the soil, they form coal, petroleum and natural gas. Okay, and what about the sources of inorganic compounds? The sources of inorganic compounds can be rocks, soil, air and water. Okay, the students, organic chemistry basically हमारे पास chemistry of living material है, because the living materials are made up of organic compounds. So the living materials are the sources of organic compounds when they are living and after their death, and when they buried under the high temperature and pressure also. So the organic compounds or the organic chemistry is basically the chemistry of carbon containing compounds, but यहाँ पर एक limitation है कि there are some organic compounds which have carbon in them but they are not organic in nature. अब उनमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स आ जाते हैं, because their properties do not match with the properties of organic compounds. That's why there are inorganic compounds. Okay, the modern definition of organic chemistry will be the branch of chemistry that deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. Okay, what does it mean, derivatives? If we have a compound जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, all these are hydrogens, and when one of the hydrogen is replaced by another atom, यहाँ पर मैंने इसको क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया है, then this new compound become the derivative of the बेसिक कंपाउंड. जो भी मेन कंपाउंड था उसका ये डेरिवेटिव बन गया है when I have replaced it one of the hydrogen with the another atom. So the modern definition of chemistry is all the carbon and hydrogen containing compounds and their organic chemistry. Okay, so the sources of organic compounds can be natural or the synthetic one. What are the natural sources? When the organic compounds are directly obtained from the plants and animals, and these are coal, petroleum, natural gas and other carbohydrates and proteins also. And what about the synthetic sources? When the organic compounds obtained from living or non-living sources in the laboratory, that is production of alcohol, carboxylic acids, aldehydes, etc. So if we talk about the synthetic organic compounds, तो ये दो तरीके से prepare हो सकते हैं. One is partial synthesis and second one is total synthesis. What about the partial synthesis? When a desired compound is obtained from the intermediate product of the reaction. Okay, means कि हम दरमियान में से कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ले लेते हैं, उससे अपना डिजायर्ड कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल सिंथेसिस. और अनदर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन होगी द प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड्स आइसोलेटेड फ्रॉम natural sources are used to prepare other organic molecules.
ओके मीन्स कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड स्किपिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन एंड अल्कोहल। ओके यहाँ पर एल्डिहाइड जो है वो हमारे पास ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक है, नेचुरल सोर्स से, और देन इट इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज partial synthesis. And what about total synthesis? When a desired product is prepared by converting the starting material through many steps is called total synthesis, or the process in which the organic molecule is synthesized from a small and cheap readily available molecules. For example, carboxylic acid can be obtained by the oxidation of alkane through many steps. अब यहाँ पर मैं आपको एक ऑक्सीडेशन सीरीज बता देती हूँ कि अल्केन्स की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल्स बनते हैं और अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। अगर तो हम अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं देन इट इज़ टोटल सिंथेसिस, और अगर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है देन इट इज़ पार्शियल सिंथेसिस। आई थिंक सो अब आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन, द बायोटेक्नोलॉजी और द फर्मेंटेशन। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है इन विच वी यूज some microorganisms for the production of chemicals for the welfare of mankind. अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड विनेगर फ्रॉम मोलासेस, एंड हम यहाँ पर यीस्ट को यूज़ करते हैं, एंड दीज आर द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन यीस्ट। ओके, तो this is one of the way to get the organic molecules also by use of living microorganisms. In the last we will have the questions, exam questions. Exams में जो है वो partial and total synthesis का difference आ सकता है, differentiate between partial and total synthesis along with the example. So the students, you should note it down in your notebooks. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।